자리가 돼 기도 그림 소리를 노래를 스케바리스테나도 음, 음,
Hello everyone, welcome in. Hello Neelam ji. Hello Sanjana ji. हरे कृष्णा, जय माता दी. हेलो श्रीमा, कैसे हो आप लोग? नीलम, संजना एंड श्रीमा, आप लोगों ने जो लास्ट रीडिंग में क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने उनका जवाब भी दे दिया है. एक तो आपको कम्युनिटी पोस्ट के सबसे रीसेंट वाले पोस्ट में भी मिल जाएगा एंड मेरे लास्ट स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा. ठीक है, आज की रीडिंग मैं कर रही हूँ. डोंट वरी अबाउट दैट, बट लाइक लास्ट रीडिंग देखनी हो तो वो देख सकते हो. एंड नीलम जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर कर दिया था. हेलो सन्स एंड मॉम्स, वेलकम इन. हेलो क्वीन, एंड आई एम सो सॉरी कि यू नो आप लोगों को मेरे कारण इतना इनकन्वीनियंस हुआ. मुझे आई डोंट नो मेरे वाईफाई को क्या हो गया था. इट वाज जस्ट ऑल ओवर द प्लेस. तो हाँ, विल स्टार्ट विथ नीलम टुडे. हेलो क्वीन, हेलो, welcome in. How are you? नीलम, देखो बाबा, हो जाएगा. रिश्ता तो हो जाएगा, लेकिन पीठ पीछे भी देख रहा है, मैं वो बोल रही हूँ. ऐसा है ना कि होता है ना कि एक चीज़ हाँ पसंद तो आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार इससे भी बेटर मिल जाती तो बात बन जाती टाइप्स. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ रिश्ता नहीं करना है, ये तो आपको सेफ साइड में रखे हैं. ठीक है, देख रहे हैं कि उनको अगर कोई बेटर मिल जाती है तो वैसे मिले कि नहीं, आना तो इनको आपके पास ही है. लेकिन हाँ, आप देख लो बाबा. देखो, अगर एक इंसान आपके लिए अभी श्योर नहीं है तो आप भी और भी रिश्ते देखो, है ना. आपको क्या पता कोई और अच्छा बेटर इंसान मिल जाए, क्योंकि ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको आपकी कदर है नहीं एक्चुअल में, है ना, कि आपके होते हुए भी किसी और को ढूंढ रहा है ना. हेलो मदीहा, क्वीन बाबा, डोंट वरी, आई विल डू योर रीडिंग. आई एम गोइंग इन एन ऑर्डर, सो यू डोंट हैव टू कीप आस्किंग योर क्वेश्चन. देखो, आप क्वेश्चन बार बार पूछोगे, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगी कि किस पे कर रही थी, आपका रीडिंग हुआ नहीं हुआ, है ना. तो अब मेरे स्ट्रीम में ये हमेशा होता है कि जिस ऑर्डर में मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं ना, मैं वही ऑर्डर से जवाब दे देती हूँ. तो लाइक बार बार क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, संजना, देखते हैं. आपने कल का रीडिंग देखा था क्या संजना? एक वो चैनल सॉन्ग में मुझे वो आया था, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बैगन की टोकरी में सो रहे थे. तो कैसा एनर्जी था ना कि लाइक आलू है लेकिन बैगन की टोकरी में चले गया तो बैगन ने लात मार के निकाल दिया, है ना. तो ऐसे ही है कि ये लाइफ में भी ना ऐसी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि लाइक आपके बिना रह सकते हैं क्या. जब बात नहीं बनेगी, लाइफ आपके बिना आगे नहीं जा रही है, तो लात खा के आपके पास ही आना है इनको. ठीक है, क्योंकि आप ना एकदम रानी हो, है ना. क्या बोलते हैं, सम्रागिनी. ठीक है, आप इतना पेशेंस रखते हो, और ये कितना भी फालतू हरकतें कर ले, कितना भी टाइम पास कर लें, यू नो इनका थोड़ा सा जो आपकी तरफ देख लें, आपसे थोड़ा बात कर लें, तो ऐसा लगता है कि आप मान जाओगे. लाइक थोड़ा मनाएंगे तो आप मान ही जाओगे टाइप्स. ठीक है, तो हाँ, वही है कि बस यही है कि थोड़ा सुधरें, दिमाग लगाएं सही जगह पे. फालतू गानों से दूर रहें, है ना. बाबा, आपके दिल की बात है वो, हम सब जानते हैं, लेकिन ये बेवकूफ इंसान को कौन समझाए. है ना. इनको तो लगता है कि आप इनके हो. हेलो हिमानी, वेलकम इन. कैसे हो आप? क्वीन, चलो बाबा, आपका टर्न आ गया. सॉरी, सन्स नहीं, क्वीन ही है. क्वीन का क्वेश्चन है, फिर
सन्स एंड मॉम्स का है। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए बोलती हूँ कि ज़्यादा ना स्पैम नहीं किया करो। सार्थक्स नेक्स्ट एक्शंस फॉर प्रेरणा, ठीक है। आई थिंक कहीं ना कहीं इनमें, इनको भी आप में इंटरेस्ट है क्वीन, बट प्रॉब्लम कहाँ है ना कि इनको आप में भी है और आपसे हाँ संजना, वो जो पार्ट आया ना कि टाइम पास करते हैं, अच्छा हाँ श्रीमा, आई एम सो सॉरी बाबा। क्वीन का करने के बाद आपका ही करती हूँ, ठीक है। आई डोंट नो आपका like, हमेशा ऐसे कैसे मोस्टली स्किप हो जाता है। मैं ट्राई करती हूँ कि लाइक नहीं हो, बट आई डोंट नो, कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं आपका कर दूंगी। क्वीन देखो बाबा, आई थिंक ही इज़ इंटरेस्टेड इन यू डेफिनेटली, ओके। एक सेकेंड संजना, आपका समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, ठीक है। प्रेरणा, आई थिंक ही लाइक्स you but he also likes other people, okay? So he will communicate towards you, but he's also, you know, he's also having fun around, but he will come towards you, he'll talk to you, you know, he'll connect with you. Hello Ankita, welcome in, कैसे हो आप? संजना, आपकी आज की रीडिंग क्या थी ना कि वो जैसे ना टाइम पास कर लेता है, लेकिन आप तो इनके लिए रानी हो, है ना। और आप इतने पेशेंट हो, वो कुछ भी कर लेता है, आप उनके पास आते रहते हो, यानी इनकी कहीं ना कहीं ये मनाएंगे तो मान जाएगा टाइप्स, है ना। श्रीमा बाबा, ही वॉन्ट्स टू ऑफर रोमांटिकली, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू, यू नो, कम टूवर्ड्स यू एंड ऑफर द कनेक्शन, या जो भी बोलते हैं। ही वॉन्ट्स टू ऑफर अ रोमांटिक कनेक्शन, डिपेंडिंग ऑन आप दोनों अपने कनेक्शन में कहाँ हो, ठीक है। बट उसको शर्म आ रही है किसी बात से, कि शायद इसने कुछ किया हो जिससे इसको लग रहा है कि ना, कि शायद मैं नहीं बात कर सकता हूँ, शायद ये नहीं मानेगी, ठीक है। ऐसा कहीं ना कहीं ये एनर्जी है इसका, और आप दोनों के बीच का, ठीक है। सन्स एंड मॉम्स, मोनीश कांटेक्ट करना, ठीक है, लेट्स सी। बाबा, यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। ही विल कांटेक्ट बट इट विल टेक सम टाइम। I would say around October, September, October. Um, Around that time he'll contact you, but a lot of patience from your side. Okay. मदीहा बाबा, एक सेकेंड, हाँ, ऑर्डर में जा रही हूँ तो आपका ही टर्न आ गया। हस्बैंड की करंट फीलिंग्स, ठीक है, लेस कांटेक्ट चल रहा है। आय हाय, सबके ऐसे ही निकल रहे हैं क्या? मुझे डर के रहना है क्या? Also Ankita, Shrima, who else? आप दोनों के जो yesterday's question था, I did do your readings. You can find them in the comment section of the last stream, या the most recent community post. Okay. Um, Hello Katie, how are you? Um, I was, I'm assuming it's night where you live, right? Are you not asleep yet? Can you not sleep? Madiha, देखो बाबा, he is, इस इनके दिमाग में कैसा है ना, हाँ पापा, इट्स ओके, आप लोगों की गलती का है। आप लोग तो
इतना पेशेंस रहते हो, इतना पेशेंट रहते हो अपने हस्बैंड्स के साथ, यही फालतू की हरकतें करते हैं। देखो कहीं ना कहीं इनको कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, है ना। ओह, व्हाट डिड यू से? इसको ये कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं नहीं जा रहे, आप इनके बिना रह नहीं सकते, तो लाइक आप फाइनली फाइनली, वाओ, द कैरेक्टर ग्रोथ आई वाज वेटिंग फॉर, किटी। See, Katie, like when you're hurt, right, you're allowed to be angry at people. There's no being a bigger person when that person is acting like a child. हेलो बसित, वेलकम इन। हाँ, मदीहा, देखो इनको कॉन्फिडेंस है कि आप तो कहीं नहीं जा रहे हैं, है ना, तो ये जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो लाइक ये आपके लॉयल्टी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो लाइक पीठ पीछे टाइम पास करते हैं, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं। इनको लाइक ऐसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि लाइक आप क्या, आपका मेंटल स्टेट क्या है, आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, ये कांटेक्ट ऐसे बिहेव करते हैं आपके साथ, है ना। इनके हिसाब से तो देखो शादी तो हो गई है, पति तो है आपके पास, वो कुछ भी करे आपको क्या, बदतमीज इंसान है। मैं तो बोलूँ कचरे के डब्बे में डाल दो, कचरे वाले उठा के चले जाएंगे। मेरा होता तो मैं तो ऐसे ही करती। Oh, that's good, Katie. I love that for you. But when someone's hurt you, you're allowed to be angry about it. It's not, you don't always have to be a bigger person. आय हाय, बच्चे भी हैं आपके, कैसा बदतमीज इंसान है यार। जब देखो, या तो शादी करनी नहीं चाहिए, इंटरेस्ट नहीं है तो, और कर लिए तो बच्चे नहीं करने चाहिए। फिर ऐसे बच्चे करके ऐसे फालतू हरकतें नहीं करनी चाहिए। इनके लिए ना एक अलग जेल होना चाहिए। जेल नहीं, एक काम करते हैं ना, सारे ऐसे पति जो होते हैं इनको सारा लाइक एक झुंड बनाते हैं, इनको जाके ना एक आइलैंड पे छोड़ के आ जाते हैं कि रहो। बड़ा नो कांटेक्ट सूझ रहा था ना, नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट जो भी सूझ रहा था, अब करो। Katie, like imagine if your daughter was going through all of this. Would you still try understanding her husband's perspective? Like you see what your daughter is struggling with every day. Like I'm saying daughter, I hope it doesn't happen to her. Like it won't happen to her. I'm just helping you get some perspective. Exactly. So like don't think about him. Like there's this French uncle or an old guy who's like he categorizes red flags, and he's like, if he doesn't do this, alpaboo, which is like throwing it in the dustbin. That is where like I've learned that. किसका रीडिंग चल रहा था? Can like someone tell me? Let's see, Katie.
Like next in queue is Himani, but I don't know कि like last reading मैंने finish किया या नहीं किया. Katie, there's a lot of competition. Okay, a little hard work. Your schedule will be a chaos, but if it's like a temporary thing, if you're not considering it for the long term, then you can, do this. I do, I do believe in tarot. Like I'm literally a tarot card reader, so I do believe in tarot. Vastab, is that how we say your name? Welcome in. I hope you're, doing well. How are you doing? I don't know what a cold reading is. How I do tarot is I connect with the goddess I worship. I'm a Hindu, so I connect with Ma Durga, if you've heard of her. So any question all of you ask me, I ask her. So I get my information from her, and tarot just becomes a medium that helps me materialize all that information, right? So I don't like think too much into this. I just, connect with the goddess and, she guides me. So I would love for you to, educate me on what this cold reading is. If you don't, I'll like Google it after the stream. But, I love. Ooh, I see. I don't do astrology actually. I tried learning astrology. There's like a lot of books that I'm yet to read, but I don't know. Tarot seems like the most comfortable medium for me. Himani, जॉब पुणे में ही सर्च करूँ या दूसरी सिटीज़ में? ओके, हिमानी जी देखो, जॉब्स तो आप हर जगह सर्च कर लो, ठीक है? आपको जहाँ अच्छी मिलती है वहाँ लग जाओ. बट आई थिंक पुणे में बहुत केओटिक लाइक सिचुएशन बन रही है रिसेंटली. आगे का फ्यूचर भी थोड़ा केओटिक है पुणे में, लाइक गड़बड़ वो सब हो सकती है. तो बेटर है कि आप कोई और सिटी में ढूंढो पापा, है ना? लाइक बट अगर आप लोकल हो, आप कंफर्टेबल हो, आपको वहाँ का एटमॉस्फेयर समझ में आता है, वहाँ पे आप कंफर्टेबली रह सकते हो, तो वहीं ढूंढ लो, कोई बात नहीं है. बट बेटर है कि आप थोड़ा बाहर के दूसरी सिटीज़ में ढूंढ लो, या हैदराबाद आ जाओ. मैं हूँ. Sure, Vastab. I don't know how to say your name. You should like help me pronounce. I'm sorry, English is not my first language, so I may fumble when it comes to names. Ankita, hello SS, welcome in. You're new, if I'm not mistaken. Uh, do you do cold readings? Cold. I don't know if I want to try that, I'll be honest. I think I'm comfortable with what I do. Um, it seems like based on the summary Google gave me, it feels like a very, you know, like a very magician sort of a reading. But I'll look into it, what could a Google summary tell me about something, right? Uh, SS, don't worry, Baba. When it's your turn, I'll call you out. Okay, in my stream, you don't have to constantly post your question. Okay, I go in an order. So whenever it's your turn, I'll call you out and I'll do your reading. Okay.
अम, अच्छा ठीक है अंकिता, देखते हैं। लेकिन कल रात से बात नहीं हुई है तो इट्स नॉट दैट लॉन्ग, बट देखते हैं। देखो, लड़ाई तो हुई है, लेकिन क्या है ना कि अम, देखो लड़ाई हुई है लेकिन रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं बोथ ऑफ यू स्टिल केयर अबाउट ईच अदर, एंड बोथ ऑफ यू के बीच में को ना वो हो गया है कि इस बार ना ये कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा या वो करेगा, है ना। तो लाइक आप दोनों यही वेट कर रहे हो कि सामने वाला पहले कांटेक्ट करे, ठीक है। तो ऐसा हो गया ना कि आप दोनों ने एक चेकमेट में अटक गए हो। चेकमेट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉ, ड्रॉ होता है क्या? इट्स बिन अ व्हाइल सिंस आई प्लेड synthetic meat. Well, I'm a vegetarian, so I don't really. I've I've never tried synthetic meat like that. So I, I mean, it's everyone's personal goal, you know. Some people, like I know a few vegans who've uh, yes, stalemate, thank you so much. तो इट्स लाइक कि आप दोनों ना ऐसे भिड़ गए हो, लाइक कि ये वेट पहले रिस्पॉन्ड करेगा या मैं, या वो बोल रहा है कि ये पहले करेगी एंड यू लाइक कि ये पहले करेगा। तो इट्स लाइक यू नो both of you are stuck in this weird space where you're waiting for the other person to respond, but हो नहीं पा रहा है। लेकिन अच्छा बाबा, ये ना शायद से कुछ टेढ़ी मेढ़ी हरकत करके है अंकिता, ठीक है। ये आई थिंक कुछ पार्टी शादी करके आया है, ठीक है। ये ड्रिंक व्रिंक करता है क्या? बायोटेक इज कूल। अच्छा, आई थिंक शायद से ड्रिंक ट्राई किया है इसने, या पी भी लिया था या कुछ, तो भी इसको नशा वशा चढ़ गया था, तो वही सर्वर दुख रहा है इसका। तो वही टेढ़ी मेढ़ी हरकतें की ही है इसने। बाबा देखो, एक बात बोलूं मैं, do you really love him, or are you just attached to him, that you got so used to him being around? Because it's not my area of interest. Well, a lot of things are cool, but doesn't mean I can be in everything, right? uh, बट या अंकिता देखो, बाबा आपको बस उसकी आदत हो गई है, या आप सिर्फ काम चला रहे हो ये रिलेशनशिप का। बिकॉज कहीं ना कहीं लगता है ना कि ये आपको खुश रखता नहीं है, ड्रामे करते रहता है, लड़ाई करते रहता है, और आपको ना हमेशा ऐसे ना पैनिक में रखता है कि लाइक आप बहुत नर्वस रहते हो इसके आसपास कहीं ना कहीं। लाइक यूजुअली देखो पार्टनरशिप्स में ना बोथ ऑफ यू आर ईच अदर सेफ स्पेस, लेकिन आप हमेशा ऐसे एंशियस रहते हो, विच इज़ नॉट अ गुड साइन इन अ रिलेशनशिप, आई विल बी ऑनेस्ट, ठीक है। आई एम नॉट अ रिलेशनशिप गुरु, बट बेस्ड ऑन व्हाट आई सी एंड एवरीथिंग, लाइक कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यही सब कुछ है, लेकिन वो ना उसका बिहेवियर अप टू द मार्क नहीं है। तो एक बार बात करके देखो इससे कि लाइक सुधर जाए तो सुधर जाए। वो भी जेन्युइनली अगर आपसे प्यार करता होगा तो आपकी
आपके लिए बेटर होने की कोशिश करेगा. Vast tab, well, my area of interest would be, yes, Ankita, he is. What do I like? I like nature. I like knowing more about the goddess I worship, which is quite unfortunate. There's not a lot of people talking about her or anything. But yeah. Like, there are people reading her texts and stuff like Devi Bhagavatam, but they are like, they love other gods, So even though they're reading her texts, it's like they put their god's angle into the text. So like, there's no one who truly worships her and reads her texts online. And like locally, I don't find like a lot of people I could rely on. So yeah, I like talking to people. I love meeting new people, which is quite different, I'm sort of an introvert, but yeah. I mean, I don't really. Ancient texts, I don't know. Like, I don't think I know enough to comment on those. Like, as long as your beliefs don't, don't hurt someone else's beliefs, it's fine. Love isn't really transactional. You do things because you like doing those things. It's reciprocative, not transactional. You're not doing something because the other person did it. You're reciprocating that affection. You're reciprocating the thought behind it. SS Baba, आपका turn. We did Ankita. So we have Katie first because she is a paid member. ठीक है, उसके बाद we have Basit, then we have Rain, then we have then we have USS. ठीक है. Okay, Katie, let's do your question. Could you please see if she's having fun? Okay, let's see. Well, they're making him spend a lot of money, so he's not really happy about it. He's like very depressed, like I don't make enough money and they're making me, spend all this money, and he's very emotionally disturbed, mentally disturbed. He's not really enjoying the trip. His parents and like his mom and kids are, they're enjoying the trip the most, but he's like more worried and things like that. I mean, that's sort of true, but you know, like I know there's certain belief systems that thrive on, destroying other beliefs and all of that. True. Very true. I understand that because I come from a country where this is very prevalent. So I live all of this. But unfortunately, it's become such a common occurrence that we don't know how to take it anymore. I guess. 1 second. Basit.
let's do a reading. Well, she is serious, okay? Her family is going to visit you next month. But like right now, don't try doing anything, okay? Don't try being a hero. Don't try convincing her or anything. Just work on yourself, okay? Um, do whatever you can, however you can. I don't know. I don't think it's sort of cool. Uh, because I come from a belief system where, you're told that, you're an entire universe in yourself. But we also believe in the existence of God. So I don't really know where that mindset comes from. Like, I can't comment on it as much because I don't understand it. But yeah. Rain, a message from Yoto. What do you think about it, though? I'd like to hear your thoughts. Uh, hmm. He misses the time the both of you spent together. Okay. Um, he's thinking about all the times, both of you had the emotionally, physically charged encounters, those missed opportunities of getting closer. And he's thinking about all the ways, now that he's not around, you'll have all these men all around you, hovering like bees, And basically, he does miss, being your friend. He misses being able to talk to you every day. SS. Dipanjan Jan, come back to Papa. Okay. SS. Yes, this person will come back to you, but it looks like you'll have to like go ask them. You'll have to initiate the communication. If you do not initiate the communication, it will take some time for this person to come out and talk to you. I hope my voice is not too scratchy. Then let him come towards you, give him time. जब उसको मन करेगा, whenever he's ready, he'll like talk to you. I'm glad it's fine because haven't been feeling well for like a couple of days, but I didn't want to miss out on streams, so like as long as I can talk, right? I don't know. I think honestly, I am I don't mind people having their own children,
But I feel like, there are already a lot of kids who do not have, parents who, like, who can take care of them. So personally, I would rather adopt, but I'm not like, how dare you bring innocent children into this world, because I don't know, what circumstances led them to having that child. So I try keeping a lot of my perspectives neutral, because a lot of people go through a lot of things and we don't really understand. So I'd rather hear their side of things before I, decide what to say about it. But I'm not God. So SS, if we talk about time frames, Baba, it would take up to December. So like time lagega, you'll have to be like what is decidism? One second, let me Google that. Wow, I'm learning a lot of things from you. Um, um, Google says it's to think about two or more possibilities and choose one of them. What does that mean? To influence something so that it produces a particular result. I don't know. Can you like tell me what decidism means? Because I haven't really heard of it. Blasphemy, I don't know. I think it's very subjective. Like, again, you don't know the circumstances that led up to it. Like, I know there are some people who just do it for the sake of doing it, but oh, okay. I'll have to Google that. I don't know how to pronounce it, and I'm not going to try it either. Decidism. Is that how we say it? Mm, yeah, Google's not giving me an answer for that either. Where can I look for this? Decide. But that's how we say decide, right? I feel like I'm back in school. um, Hello, Siddhi. How are you? A what? Uh, um, oh, uh, okay. Wow, I didn't know that. Um,
I don't know how I feel about it. I mean, to each their own, I guess, because every culture has their own way of representing God, and people who believe in that sort of thought process connect with it, and people who don't leave that culture. So I guess to each their own. Siddhi, let's see. Abhijit Mehra, Mehdi, current feelings for you. Okay. Um, आप बहुत ना एकदम सनशाइन जैसे हो. इफ़ यू सीन मूवीज उसमें कैरेक्टर्स होते हैं ना एकदम सनशाइन जैसे, लाइक दे ब्रिंग सो मच पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग, राइट? तो लाइक ऐसे ही है कि लाइक कितना भी इनका सैड डे चल रहा हो या लड़ाई वड़ाई भी हो गई हो, जब आप वापस आते हो ना विद दैट लव एंड अफेक्शन, इनका लाइक सब कुछ ऐसे लगता है ना कि सब सुधर गया. हाँ आनंद जी, मैं लाइक कल रात में स्ट्रीम कर रही थी, मेरा वाईफाई नहीं पता क्यों गड़बड़ करने लगा, तो लाइक स्ट्रीम एंड हो गई थी और मुझे बुरा लगा कि लाइक इतने लोग में स्ट्रीम में यूजुअली आते हैं, वेट करते हैं मेरा, और मैंने कहीं ना कहीं उनको लेट डाउन किया, उनको दुखी किया है, तो बस इट. हाँ बाबा, आपका हो गया क्वेश्चन. तो लाइक हाँ, दिन में स्ट्रीम चल रही है मेरी. अम, आप यहाँ क्यों हो? आपको पढ़ाई करनी चाहिए. Science is fun, you know. I like science. I studied science till I was like in 12th. हाँ मैंने किया था, रात में 1 बजे बैठ के मैंने कॉल किया, बट देयर वाज नो वन हु पिक्ड अप द कॉल. और फिर सुबह तक वो खुद ही ठीक हो गया, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, खैर. Like I love biology in general, you know. Oh, thank you सिद्धि. बस आप लोगों का ही प्यार है, और ये प्यार के काबिल भी तो बनना पड़ता है ना. आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे. uh, I mean, like, I like them, but I love biology the most, you know? Like, I love how the human body works. It's so well tuned, you know? It's like a whole cute little world on its own. Like, when I think about RCBs and platelets and white blood cells, they're like these tiny soldiers running around and, taking care of the body, fighting for the body. It's a very cute thing. I love the human body. It's very adorable. Yeah, that's something I love too. And like it's so resilient, right? I mean, that's your perspective, right? You're entitled to your opinion. But like I'd like to think it's very, well done. I mean, if we're talking about how it could improve and all of that, there's a million ways it could be better. But I don't know, it's perfect for me. I love my body. And like I love everyone else's. I mean, not in like a creepy way. It's just, I've never
seen someone and like I was like, that's not a good body, you know. It sounds so creepy when I say it like that. Um, but yeah, don't ruin it for me. How dare you? Like, sure, you could, you know, come here and talk about all these sci-fi stuff, but nah, you don't get to ruin the human body for me. I don't know, it's just the way it is. It's very beautiful to me. Like, you know how some people love the rain and some people hate it? It's something like that, you know. I like it like that. Um, that's cool. I don't know how I feel about snakes though. Like I grew up, like there would be like a lot of tiny snakes in my house, you know, because we have like this huge tree. So like lots of snakes that, you know, would just pop up in my house. And like personally, I think they're very cute, you know, very cute little snakes. They're such babies. But would I touch them? That's a whole different story. I have no idea. There would just be like these tiny, you know, 3-inch babies roaming around. Like recently there was this huge snake that came. It was like a white color one. And the guy who came from the animal rescue, he was like, it's a non-poisonous one, and it was like all over my tree and then it went away. So yeah, that's that. बाय आनंद जी, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना. I'm sorry, I don't know what kind of snake it was because you know I'm not like that. It was like a white one. It wasn't grayish. It had like scales, you know. Um, I think the scales outline was grayish, but like the base color was white. Yeah. It sort of looked like, I would say, I don't know. Sure. Um, no, it wasn't this one. It didn't have checks. It was like, you know, fish scales. Like, you know how kids draw scales on fishes? It was like that. But it was like white, and the outline of the scales was gray. I think I may have a video of it. I could show it on stream if I find it. I don't know if I do because I usually don't keep these things. I don't know why I don't, but I just don't. Um, I see. Did you get your reading, Rain? I hope you did.
Sure. Which one? What is AFK? Oops. Hold on. Um, yes, Katie, I did answer it. He is not having fun, unfortunately. His mother and kids are making him spend a lot of money, and he's not truly like enjoying the experience on the whole. He's more worried about the money and how much money they're making him spend and all of that, right? But usually the snakes that would come out of my house would sort of look like earthworms, because they'd have like that a brownish maroon shade to them. I don't know what that is either. Let me search. Well, I'm learning a lot of new things, I suppose. But it's fun. Mm. I mean, I do believe it. I know it's not far from reality. But there's, one thing I've learned is there are always exceptions to things. There are always people who are not like that. Hopefully, I'm not like that. But who knows? I'm human as well, I'm flawed in many ways. Sure. Let's see, Ray. Yoto, like moving on or not is on you, okay? They want you they want you to explore your emotions fully. Like, you've got these feelings in your chest, you've got these feelings in your life. They want you to experience them, okay? Don't just force yourself into like a mold that wasn't really built for you. Okay, it's okay to explore your emotions. Thank you, Vastab. I had fun with your questions. I've learned a a few new things. So, like, thank you as well. I hope you have a good whatever is happening in your time zone. Back to you, Rain. Mm, somewhere your guides feel like you haven't truly explored your potential yet. You're like you're stuck in this limbo of what you're allowed to feel and what you're not allowed to feel. But you have to remember, whatever your feelings are, they're valid. You know, there's nothing known as what you're allowed to and what you're not allowed to feel. Everything that's yours is worth experiencing. Okay, so don't try forcing yourself into a mold that was never yours to begin with. So if you want to move on, like, sure, no one's stopping you, but let it come from a space where
where you've experienced all of the emotions that were there to experience, and there's nothing left, so you're deciding to move on to something better. Don't just try to move on if you're trying to avoid a heartache or something. Okay, don't move on out of fear. If you want to move on, do it out of love, that you've experienced everything you that was there to experience. Right, exactly. Because fear is always going to be there. Fear is what stops us from experiencing a lot in life. Like, imagine if I would fear what people would think about me and I would never start tarot. Imagine how different my life would be. It would be awful. So yeah, don't let fear, hold you back. My throat is so raw today. Hello Ishika, how are you? Hello Sanju. Rain, definitely potential, like a lot of potential. He's not a lesson, okay, unless you want to make him one, like you decide to move on and things like that, right? It'll take some time to get into this connection, okay, to get into like an actual romantic relationship, but it's definitely not like a lesson, not in the way you fear, okay? Go into this relationship with a very open, a positive, and a loving mind, and you'll be surprised by how the universe reciprocates. Thank you so much as well, Jane, for trusting me with your time, space, and energy. I hope your reading resonated, and I hope I'm giving the honor to read for you again. You are just too kind, Rain. I've always believed that what you feel about a person in front of you is a reflection of you. So if you find that I'm amazing, there's definitely something a lot more amazing in you that, you could recognize something in me. So you are just as amazing, if not more. uh, Ishika Baba, it's 250 per question. Yes, we're besties, It's 250 per question. That is like an amount that I usually say. But I understand, not everyone is financially in the same space. So it's more of what you can afford. ठीक है, रीडिंग करें or do you want like an in-depth wala? Either way is fine, I don't mind. Okay. प्यार की कांप मुझे Okay.
श्योर संजू, वी कैन डू दैट। आपका क्या क्वेश्चन था? सुजित करंट फीलिंग्स फील नो कांटेक्ट। ठीक है, देखते हैं। ये ना नो कांटेक्ट वाले में बेजार हो गई हूँ इससे। एक काम करते हैं संजू जी, ठीक है, ये सारे नो कांटेक्ट वाले उल्लुओं को हम एक ना ओमनी में डालते हैं, ठीक है, इनको जाके एक अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड में जाके छोड़ देते हैं। जब एक्चुअल में सिग्नल ना होगा ना, तब समझ में आएगा नो कांटेक्ट होता क्या है। करते रहना जिंगलाला हु हु। संजू जी देखो, इनको ना अभी लाइफ में क्लैरिटी है नहीं, ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है ना कि लाइफ में कुछ है नहीं क्लैरिटी, तो लाइक शादी वादी करके प्यार व्यार करके क्या होगा मेरा। इनका ना वो रील देखा है अनिरुद्धाचार्य वाला, कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, तो इसको भी ऐसे ही लगता है, कोई मैं किससे प्यार क्यों करूंगा, मुझ में कुछ है ही नहीं, मुझ में कुछ क्वालिटीज ही नहीं है, मेरी माँ के अलावा किसी को मुझ में वैल्यू दिखता ही ना है। आई सी। इशिका बाबा देखो, ये मैं टैरो करती हूँ, तो डेट ऑफ बर्थ वो सब का मुझे जरूरत पड़ता नहीं है, तो यू डोंट हैव टू लाइक शेयर, क्योंकि आजकल ना बहुत सारे लाइक क्या बोलते हैं, स्कैमर्स स्पैमर्स बहुत आने लगे हैं, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा शेयर ना करो तो बेटर रहेगा, है ना। लेकिन हाँ, देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये भव्या। ये भव्या नाम वाले, आई डोंट नो मुझे इनसे क्या प्रॉब्लम है। मैं एक भव्या को लाइफ में नहीं जानती, लेकिन जितने भी भव्याओं के बारे में सुना है ना, बहुत भव्य भव्य प्राणी है ये लोग। लाइक न जाने ये कहाँ कौन से प्लैनेट से उतर के आए हैं, लेकिन इनके ना नक्शे कदम सही होते हैं ना इनकी हरकतें। ये भव्या लोगों को भी ना ये सिचुएशनशिप, ये क्या बोलते हैं, नो कांटेक्ट वालों के साथ भी छोड़ देना चाहिए। देखते हैं। ये बहुत ना ब्रेन रॉट वाला इंसान है, लाइक इसके दिमाग में ना लड़कियों को ये फंसाएगा, ठीक है, खूब सारी लड़कियों को फंसाएगा। ये ऐसा होता है ना कि पुराने जमाने में महाराज लोग रहते थे ना, है ना, वो क्या करते थे कि लाइक खूब सारे गरीब लोग होते थे ना, तो उनके ऊपर ऐसे ना एक दो सिक्के ऐसे डाल देते थे कि हाय मैं कितना महान हूँ, मैं कितना दानी हूँ, ऐसे फील करते थे ना खुद को। ये भी ऐसे ही इंसान है, लाइक खूब सारी लड़कियों को पटाएगा, सबको थोड़ा 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 अटेंशन देगा और खुद को महान समझेगा। किन लोगों से एक बंदी नहीं संभाली जाती, मैंने इतने सारे संभाल के रखे हैं, मैं तो हूँ किसी जमाने का राजा महाराजा, लाइक मेरे बराबर तो कोई नहीं है। बहुत ईगोइस्टिक इंसान है ये, लाइक ऐसे लोगों का ना इशिका मेरे पास एक ही सोल्यूशन है, कि इनको कचरे के डब्बे में डाल दो और कचरे वाला लेके चले जाएगा। गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल। हाँ बाबा, देख रही हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, लाइक जो कार्ड्स में आ रहा है ना, मैं वही बोलते जा रही हूँ, लाइक डोंट वरी, लेकिन जब तक आपका आंसर नहीं मिलेगा तब तक ढूंढते रहेंगे हम, है ना।
भगवान मेरी जिंदगी में कभी कोई ऐसा भव्य प्राणी ना भेजना। आपकी बड़ी कृपा होगी माँ, बड़ी कृपा होगी। और मेरे साथ साथ मेरी जो भी स्ट्रीम देखता है, जो भी मेरा प्रिय है, उनके जीवन में भी ऐसे फालतू इंसान, फालतू प्राणियों का आगमन ना हो, तथास्तु। ये ना, आई डोंट थिंक इशिका ये किसी भी चीज को ना सीरियसली लेता है। इसके लिए ना सब कुछ हंसी मजाक है। लाइक मैं सीरियस हूँ तो पूरी दुनिया सीरियस रहेगी, मैं सीरियस नहीं हूँ तो कोई भी सीरियस नहीं रहेगा। कि लाइक पूरी दुनिया मेरे आसपास ही रिवॉल्व करती है। लाइक तुमने मुझसे पूछे बिना सांस ली तो ली कैसे? ये मेरा प्लैनेट है, तुम बस इस पे भाड़े पे रह रहे हो। है तो बहुत कैरेक्टर का ढीला इंसान, है ना। एक स्क्रू ड्राइवर लेके इसको, इसका दिमाग का स्क्रू भी थोड़ा टाइट कर लेना है ना। इससे अच्छा ना इशिका, ये बहुत ना डैमेज्ड पीस है, सच बोलूं तो। ठीक है, ये डैमेज्ड पीस को फेंको, आपके इस फ्यूचर स्पाउस को वेलकम्स करो। हेलो याना। यस, दैट इज द एटीट्यूड इशिका। डैमेज्ड पीस को फेंको, अच्छा माल घर में लाओ। ये ना क्योंकि लाइफ लॉन्ग ना कमिटमेंट के नाम पे ना इशिका घुमाएगा, बहुत उल्लू बनाएगा, ठीक है। बहुत टाइम पास करेगा, इधर चला मैं उधर चला, जानी कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया। मैं, हाँ यार, मुझे भी ऐसी एक मिला था, लेकिन उसका एक्सक्यूज है। लाइक उसको एग्जाम आने वाले हैं उनके अगस्त में, तो ही हैज एन एक्सक्यूज कि लाइक पढ़ाई कर रहा है वो। बट इनका क्या एक्सक्यूज है? ये ना लाइक एंड्रू टेट, सुना है कभी उसका नाम? ये ना उसके फैन फॉलोइंग टाइप्स लग रहे हैं। लाइक आई एम कन्विंस्ड कि ये एंड्रू टेट के फॉलोअर्स ना, they're secretly gay, they're just too ashamed to admit it because it's embarrassing to love a man. um, इसका सीन क्या है, इज ये डिस्प्रेशन में है, ठीक है। नहीं, जनरल में बोल रही हूँ मैं, whoever follows एंड्रू टेट। लेकिन आर्यन महाशय जो है, ये फिलहाल डिस्प्रेशन में है, ठीक है। बाहर से तो डिस्प्रेशन में है, मन से तो चिंता ता चिता चिता चिंता ता चाहो कर रहे हैं, ठीक है। लाइक लाइक ये महाशय का क्या कहना है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ये दुनिया है बहुत जालिम। लेकिन जो बात करने को बैठा है उसको गोश्त करते बैठे हो महाराज आप तो बोलो ही ना। ना 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 ना।
क्या बोल कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पसंद तो करता है वो, लेकिन वो होता है ना जैसे लड़कियां लाइक टेलर स्विफ्ट और क्या था, ऐसे सिंगर्स के सैड सॉन्ग सुनने के फील्स में आ जाते हैं, भले उनकी खुशी खुशी वो शादीशुदा है, फिर भी उनको वो ब्रेकअप वाला फील चाहिए होता है ना। ये भी महाशय ऐसी हैं, बहुत ड्रामेटिक किस्म के हैं। और ये लोग बोलते हैं कि लड़कियां ड्रामेटिक है। खुद को देखे हो कभी, खुद की हरकतों को? लाइक व्हाट बिहेवियर। आई नो पसंद तो करता है, लेकिन लगे उसको ड्रामे करने हैं पहले। he wants you to chase him. Yana, please wait for your turn. I'm doing like a page reading right now. Don't worry, you'll be next. कर दो, क्या जा रहा है तुमको? कर दो ब्लॉक्स। इसने भी सही बिहेव करना नहीं शुरू किया तो हम भी ब्लॉक कर देंगे महाशय को। या ना, इशिका डोंट वरी, आपका रीडिंग खत्म नहीं कर रही है। इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन इट्स फाइन। बट याना बहुत देर से वेट कर रही है तो उनका करना पड़ेगा। uh, याना, okay, let's see. I'm all good. What about you? Yana, you feel like you're amazing, okay? This person thinks that you are a catch, you are amazing, but this person is scared. They think that what if you reject them? What if you like find someone better and break their heart, break his fragile little boy heart? Like already, I could feel the heart beating. Like looking at you, perfection. Your behavior, perfection. You, perfection. But is very scared of you again because you're too good for him. At least that's what he thinks. I don't I don't know. ठीक है शिका, और कुछ डिटेल्स चाहिए, इंफॉर्मेशन तो बता दो। And anyone else who wants a reading, let me know. Because like these are like my last readings for the day. So I won't be live for too long, right?
Have you like seen that step from like Ajay Devgan ka? Pehla tu ja tu. Ishika, your Aryan is giving that vibe, you know, like बहुत bare minimum करके बहुत खुद को 30 मार खा समझने वाला. Like in fact, even your Bhavya is like that, same vibe. Fine. Okay, everyone. Let me know if someone else needs a reading or anything, because if you don't have questions, I'll be ending the stream. किसी को जाके सताने का मन कर रहा है मुझे. बट वो कोई पढ़ाई में बिजी है तो क्या करें. तरप तरप की सिर से आह निकलती है. तो छोड़ बेबी. Thousand a what? Two thousand six. 2006 के बच्चे को बोलते हैं. 2000 okay 19 already crazy 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 bro crazy. Okay, everyone. I don't think anyone else wants like a reading. So like I'll be ending the stream here today. I'll be back again tomorrow, which would be कल क्या है? Thursday ना? Yes. I'll be back again on Thursday, like tomorrow, my usual time.
late night for India, and like sort of morning for wherever you are on the other side of the world, if that's where you are. Nyana, did you not hear your reading, love? Um, I did your reading in case you didn't hear it. Are you in the assumption that I didn't do your reading? Uh, I mean, there could be a confusion because, you know, um, my voice isn't really on its, best because uh, I'm getting breathless a lot today. I could say someone stole my breath away, but that someone would be feverish. But yeah, I don't know why I'm cracking such terrible jokes today, but yeah, that's the truth, the reality of my existence. But yeah, I'll be back again on like tomorrow, my usual time. Until then, take care of yourselves. I hope your readings resonated, you know. Thank you for trusting me with your time, space, and energies. I hope your readings resonated, and I hope I'm given the honor to read for all of you again. Until next time, which would be tomorrow, take care of yourselves and bye bye.